Dear student, myself Prakash Garg, Assistant Professor, Department of Geology, Government Bangalore PG College, Didwana. Today we discuss on important topic of economic geology, magnetic ore deposit. Magnetic ore deposits. Magnetic ore deposits are characterized by their close relationship with intermediate or deep-seated intrusive igneous rocks. मैग्नेटिक ओर डिपॉजिट में उन ओर डिपॉजिट को सम्मिलित किया जाता है जो डायरेक्टली मैग्मा के कूलिंग और कंसोलिडेशन से बनते हैं. These deposits form through fractional crystallization and लिक्विड सल्फाइड इमिसिबिलिटी. इस प्रकार के डिपॉजिट फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन और लिक्विड सल्फाइड इमिसिबिलिटी प्रोसेस के द्वारा बनते हैं. डिफ्रेंशिएशन फॉर्म लेयरिंग. इसमें डिफ्रेंशिएशन के द्वारा लेयरिंग का निर्माण होता है. निकल, क्रोमाइट एंड प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट पीजीई डिपॉजिट फॉर्म दिस वे. इस मेथड द्वारा निकल, क्रोमाइट और प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट का निर्माण होता है. क्रोमाइट डिपॉजिट फॉर्म बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेविटी सेटलिंग. फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन और ग्रेविटी सेटलिंग, क्योंकि क्रोमाइट में हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, हाई डेंसिटी के कारण ग्रेविटी सेटलिंग मेथड से फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन होता है. क्रोमाइट क्रिस्टलाइज इनटू मिनरल ग्रेन विद इन द सिलिकेट लिक्विड एंड बिकॉज दे आर हैवियर देन लिक्विड. जो अदर सिलिकेट लिक्विड से हैवी होने के कारण मैग्मा चैम्बर के बॉटम में बैठ जाते हैं, जिससे क्रोमाइट डिपॉजिट का निर्माण होता है. टू मेन टाइप ऑफ क्रोमाइट डिपॉजिट. क्रोमाइट डिपॉजिट के मेन दो टाइप है, स्टेडिफॉर्म और पोडिफॉर्म. स्टेडिफॉर्म डिपॉजिट में पैरेलल स्टार्टा जो अल्टरनेट सिलिकेट लेयर के साथ पैरेलल स्टार्टा बनाते हैं, जिसे स्टेडिफॉर्म डिपॉजिट कहा जाता है. कंसिस्ट laterally persist chromite rich layer a few millimeter to several meter thick alternating with silicate layer. Silicate layers include ultramafic and mafic rocks such as dunite, peridotite, pyroxenite and a variety of others. Less commonly gabbroic rocks. They are generally found within the basal portion of mafic, ultramafic layered intrusion of Archean age such as a Bushveld complex of South Africa. Canadian example of stratiform chromite deposit include Bird River Sill deposit of Manitoba. These deposits contain substantial reserve of poor quality chromite, average 10.7% Cr2O3. पोडिफॉर्म में कोई डिपॉजिट का कोई इरेगुलर फॉर बॉडीज़ के रूप में पाया जाता है. कंसिस्ट पोर्ड टू पेंसिल लाइक इरेगुलरली शेप्ड मैसिव क्रोमाइट बॉडीज एंड दे प्रीडोमिनेंटली फाउंड ड्यूनाइटिक ऑलिवन रिच. Podiform consist pored to pencil-like irregularly shaped massive chromite bodies and they are predominantly found within the dunitic olivine-rich rocks portion of ophiolite complex. The rocks associated with podiform chromite are generally referred to as alpine type peridotite and they are usually found along the major fault zone within the mountain belt. Sukinda Valley chromite deposit. Reserve and resource of chromite. Reservoir noun deposit and resources are noun plus unknown
unknown deposits. World chromite production by country 2006. South Africa first position 38%, and India has 18% chromite production. Use of chromite: 95% convert into various ferrochromium alloy for use in stainless steel and other alloy industries. 3% refractory use of foundry sand, and 2% chromite chemical, primarily sodium chromate, used in tanning leather, colored pigment in paint, plastic and ceramics, chromium plastic, etc. 90% क्रोमाइट का उपयोग फेरोमैग्नीशियम मिश्र धातु जिसका स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। 3% रिफ्रैक्टरी तापीय उच्च तापीय इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, और 2% क्रोमियम केमिकल जिसका उपयोग लेदर को टैनिंग करने में, कलर पिगमेंट और प्लास्टिक्स और सिरेमिक बनाने में किया जाता है। बुशवेल्ड कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड लार्जेस्ट मैफिक अल्ट्रामैफिक लेयर्ड इंट्रूजन है। इट अंडरलाई an area of roughly 66,000 square kilometer, revealed only by more than 50,000 square kilometer of Dufek intrusion in Antarctica. Diverse igneous rocks of iron and magnesium rich composition host majority of world resources of metal such as nickel, chromium, vanadium, and 6 platinum group elements, of which platinum, palladium are best known. Rhodium and gold, most famous precious metal, is not one of the PGM, are often included in estimated of PGE resource on Bushveld. Bushveld complex in South Africa. Chromite in the central sector of Eastern Bushveld complex, South Africa, studied by Eugene and Cameron. This suite is divided into 5 जोन। बुशवेल्ड कॉम्प्लेक्स को 5 डिफरेंट जोन में डिवाइड किया गया है: बेसल जोन, लोअर जोन, क्रिटिकल जोन, मेन जोन, अपर जोन। क्रिटिकल जोन is important as it is rich in chromite, sulfite and PGEs. Critical zone divided into lower, middle, upper zone. Lower zone has highest number of chromite layer occurring within the pyroxenite subzone. Chromite deposit of Bushveld complex. बुशवेल्ड कॉम्प्लेक्स में लेयर्ड स्ट्रेटिफॉर्म टाइप का स्ट्रेटिफॉर्म क्रोमाइट डिपॉजिट पाया जाता है। क्रोमाइट डिपॉजिट इन इंडिया. Orissa hosts the largest chromite reserve of country and also produce the lion's share of total Indian production. Two major deposits are Orissa, जो भारत का प्रमुख क्रोमाइट रिजर्व है, इसमें 2 मुख्य डिपॉजिट है: सुकिंदा वैली और बोला नोसाई igneous complex, constituting 98% of Indian reserve. Bola Nosai igneous complex, 3 rock unit: ultramafic rocks, and or felsic rocks. Ultramafic rocks host 4 chromite lode, occur as dike-like pluton of 3 km long and 0.6 km width at the central part. Along with it, PGE mineralization occur with sulfide, nickel, copper, iron, and silver. However, according to most workers, chromite here is of magmatic origin but
opinion are divided on stage of chromite crystallization, whether they are early or late magmatic. Beneficiation characters. Chromite belonging to early and late stage also show variation in their beneficiation character. Early stage chromite easy to beneficiate and they are associated with serpentinite. Late stage chromite are associated with fibrous and magnetic. Silicate are finer grained, has low chromium content and are magnetic. Petrography of complex. Ultramafic rocks here are represented by dunite, peridotite, websterite, laterite, and astatite. Chromatiferous ultramafic rocks exhibit magnetosedimentary textures, and cumulus, rhythmic and cypritic layering, graded bedding, grain size variation, and four layer exhibit size grading from coarse at bottom to fine at top. Gravity settling of chromite layer under steady state condition is responsible for the formation of chromite layer. Geology of area. Bola Nosai complex is situated on the girdle of Sukinda Nilgiri shear zone that extend discontinuously from Nilgiri in east through Bola Nosai up to the Sukinda in west. Chromatiferous ultramafic rocks have been emplaced within the interbedded sequence of quartzite chert quartz mica schist of iron ore group. They host four layers of chromite ore bodies of varying thickness. They are Durga, Lakshmi, Shankar, and Ganga, arranging their bottom to top in northerly direction. These four ore bodies alternate with ultramafic rocks exhibit layering, typically stratiform igneous complex. Individual grain from different ore bodies were analyzed by EPMA to exhibit compositional variation between two stages of chromite crystallization.